Hello students, how are you? Today it's a 9th class English lecture. In this lecture we will do our next topic, reported speech, that is also called narration. Firstly, we will know what is the meaning of narration. What is the meaning of narration? The art of reporting the words of a speaker. The art of presenting the words of a speaker is called narration. जिस प्रकार से किसी पर्सन्स के विचारों को आगे प्रकट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, that is called narration. Firstly, we will have direct speech and indirect speech. Direct speech. What is the meaning of direct speech? Actual words of the speaker, means without any change in the tense, without any change in the person, means actual word said by speaker, someone, some person within inverted commas. हम हमेशा किसी पर्सन्स के एक्चुअल वर्ड्स को, जब हम उसमें टेंस और पर्सन्स को चेंज नहीं करते, हम उन वर्डिंग्स को किस में लिखते हैं? इन्वर्टेड कोमास में. दैट इज कोल्ड डायरेक्ट स्पीच. हेयर इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच. ही सेड टू मी, आई एम नॉट वेल टुडे. This is example of direct speech. Now I am explaining the meaning of indirect speech. Indirect speech is not the actual words of the speaker. We do not put indirect speech in inverted commas because in indirect speech we change the tense and person of the direct speech. So in this lecture we will know how it is direct speech, how many parts are in direct speech, and firstly we will take direct speech. I have already explained to you the meaning of direct speech. Now I will explain you about the direct speech. This is the example of direct speech. We have two parts in direct speech. Two parts. First part है आपका reporting verb. फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब. नेक्स्ट पार्ट दैट इज इन इन्वर्टेड कोमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच. दैट पार्ट इज ऑलवेज पुट इन इन्वर्टेड कोमास. इन रिपोर्टिंग वर्ब, after the reporting verb we put comma because in direct speech we have two parts. को separate show करने के लिए हम दोनों के मिडल में कोमा लगाते हैं, और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको इन्वर्टेड कोमास में पुट किया जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, उसमें हम पर्सन्स को और टेंस को चेंज नहीं करते. तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है. तो मैंने आपको 3 थिंग्स बताई डायरेक्ट स्पीच के बारे में. फर्स्टली, वी पुट कोमा आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब एंड वी पुट इन इन्वर्टेड कोमास दिस रिपोर्टेड स्पीच, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ reported speech should be capital, is always in capital. Firstly, but you should remember that in direct speech we do not change the person and tense. We do not change the person and tense, but due to this part
we change the person and tense of indirect speech. Okay students, now I am telling you something. Firstly, this part of direct speech is changed. How it is changed? Firstly, say, says without any object, without object, क्योंकि अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर से और सेज है, टू नहीं है, इट मीन्स वहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है. सो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा आपका. सेज एंड सेज नो चेंज. से टू, दैट विल बी चेंज्ड इनटू टेल. says to, tells. बेटा ये मैं आपको कब बता रही हूं? जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा वो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव नहीं होगा. उस केस में हम से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और से और सेज को चेंज नहीं करेंगे. आफ्टर दैट सेड, आपका जो सेड है वो भी आपका चेंज नहीं होता. सेड नो चेंज. एंड said to will be changed in told. Said to will be changed in told. This changes, only these changes are done in direct speech. Otherwise we do not make any change in direct speech. But जो इस पार्ट के अंदर सिर्फ ये एक चेंज होता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं. बट इसके अकॉर्डिंग हमारे इफ वी हैव हेयर प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. इफ वी हैव हेयर इन दिस पोर्शन, इफ वी हैव प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, then we do not change the tense of this part. Means while converting into indirect speech we do not change the tense of reported speech while converting into indirect speech if we have here present tense or future tense. Means अगर आपके पास say है, says है, will से है, तो आप इसका टेंस नहीं बदलेंगे, आप इसका टेंस नहीं बदलेंगे. आफ्टर दैट वी विल नो हाउ टू चेंज पर्सन्स, हाउ टू चेंज पर्सन्स while converting into indirect speech. We have changes of persons. आप persons भी कह सकते हैं या आप pronouns भी कह सकते हैं. कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि persons और pronouns होते क्या हैं हमारे पास. जैसे I, my या mine, me, ये आपके फर्स्ट पर्सन्स हैं. फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, आवर्स, अस, ये आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन. आफ्टर दैट यू, योर्स या योर एंड यू, दिस इज योर सेकेंड पर्सन. This is your second person. Third person, he, his, him, she, hers
और हर. आफ्टर दैट इन दोनों का जो प्लूरल होता है दे. देयर्स और देयर. वन इज कॉल्ड एडजेक्टिव एंड वन इज कॉल्ड प्रोनाउन. देम, इट, इट्स, इट. These are your persons. First person, second person, third person. Firstly, you should know about it. And कभी कभी आपके उसमें आपको रिफ्लेक्सिव भी मिल जाता है. रिफ्लेक्सिव में आपका यहाँ माई सेल्फ, आवर सेल्स, योर सेल्फ और yourselves. After that, himself, herself, themselves और itself. ये आपके प्रोनाउंस हैं जो आपको इसके अंदर चेंजेस करने. फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द पर्सन्स व्हाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ हेयर वी हैव फॉर्मूला फॉर चेंजिंग द पर्सन्स. मीन्स these are related to reporting verb and these are related to reported speech. First person of first person, second person, third person. S for subject, O for object, N for no change. These जैसे he said to me. Here this is your subject and this is your object. And I am not well today. I am not well today. Here first person of this part will be changed according to this subject and second person that will be in this part changed according to this object and third person which I have told earlier through the table will not be changed in indirect speech. This is the process. Means when we convert it into indirect speech, here I will be converted into he. Here we will put he. Okay students, this is how we have to change the persons or pronouns while converting into indirect speech. Now we will know how to change tense, but there are some exceptional that firstly we will know how to change the tense. Change of tense. यहाँ आपके पास डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस होगा आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे. इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्टली डायरेक्ट स्पीच में आपके पास होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसके अंदर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आपके पास होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट विल बी converting into second form of the verb. Means simple present tense will be converted into simple past tense. If we have negative sentence, means if we have do, does plus not plus first form of the verb
that will be converted into did not plus first form of the verb. But if we have interrogative form, means do, does in the starting, after that first form of the verb, and at the ending we have question mark, then we have to convert interrogative form into declarative form. Means if we have do, does in yes no type form, then we will not convert it into did. We will convert it into second form of the verb, and there we do not put this question mark. We will put at the end full stop. Means we have to finish the interrogative form of the sentence. We have to change it into declarative sentence. Next, students, after that your present continuous tense. We have present continuous tense will be changed into past continuous टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारे पास होते हैं इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी, दैट विल बी कन्वर्टिंग इनटू वाज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी, दैट विल बी सेम इन द इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस and present perfect continuous tense, that will be also changed into past perfect, past perfect tense and past perfect continuous tense. Means we have to make one change only. In that case, all things are same in the present perfect continuous, past perfect continuous and present perfect continuous, present perfect tense and past perfect tense. Only one thing that is not matched, that is has or have, that will be converting into had form. This is your simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous, that all will be changed into same past tense. Simple present tense, simple past tense, present continuous, past continuous, present perfect tense, past perfect tense, present perfect continuous, past perfect continuous. After that I am coming to now past tense. In the past tense we have four parts. First one is simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous. Means simple past tense. In simple past tense we have second form of the verb, and in interrogative sentence we have did not plus first form of the verb, and in interrogative we have did plus first form, at the end we put question mark. This second form means simple past tense will be changed into past perfect tense. Simple past tense will be changed into past perfect tense. In past perfect tense we have had plus थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अगर आपके पास डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट विल ऑल्सो चेंज इनटू हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इफ वी हैव डिड first form of the verb, then also we will had plus third form of the verb. At the end we do not put, we put only full stop. Now we come to
past continuous tense. In the past continuous tense we have was, were, verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. That will be convert it into past continuous tense, past perfect continuous tense. Past continuous tense change into past perfect continuous. If we have was, were plus ing form, that will be converting into had plus been plus first form of the verb with ing form. And remember it, these two tenses do not change. Past perfect tense and past perfect tense, past perfect continuous tense are not changed while converting डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तब हमारे ये पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में गिवन है तो वो हमारे चेंज नहीं होंगे. ये तो है आपका पास्ट टेंस तक. आफ्टर दैट आई एम कमिंग टू फ्यूचर टेंस. इन द फ्यूचर टेंस वी make only slight change, means only modals, auxiliary verbs are changed only, means will, shall, will and shall both are converted into would, may, might, can, could, and other must will remain same, must, ought to, dare, need, that will also remain same. Ought to, dare, need, that will remain same, that will remain same. And other verb change, not verbs form, ing forms remain same in indirect speech. These are how we change the tense of indirect speech when we convert direct speech into indirect speech. Now there are some exceptional of this change. If firstly I have told you, if we have future tense or present tense in reporting verb in the direct speech, then we do not change the tense of indirect speech. means reported speech के अंदर हम tense नहीं बदलेंगे अगर हमारे पास reporting verb के अंदर present tense और future tense है. Other, if we have scientific fact, universal truth, historical fact and habitual fact. If we have in reported speech, then also we do not change the tense of reported speech. indirect speech के अंदर हम tense नहीं बदलेंगे. For example, my mother said to me, God is everywhere. Here we do not change the tense. When we convert it into indirect speech, we will write
my mother told me, and when we convert it into direct into indirect speech, we have declarative sentence, then we erase, हम कोमास यानी इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं और उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दैट कंजंक्शंस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो ये दोनों पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन दोनों को ज्वाइन करके वन पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट वी पुट दिस कंजंक्शन, दैट कंजंक्शन इन ही, माई मदर टोल्ड मी दैट God is everywhere. If we have these types of sentences here, so also we do not change the tense.